Well, hello everybody, and so good to be back again. Welcome to MANN DARPAN Season 2. It is that fourth Saturday of the month, और 6 बजते ही tick 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 we get together for this beautiful episode number 5. अब इस हफ्ते का इस महीने का जो फ्लेवर है, that's दिल दोस्ती दुआएं, and that is all about friendship because we all celebrated International Friendship Day this month, and therefore our theme this time for MANN DARPAN is friendship first. ये दोस्ती ही एक बुनियाद है जो हर हर रिश्ते के लिए काम आता है. And we have wonderful guests who will be part of the show as we go ahead and meet AMEER, Dr. Anshul, JURO, and gang. We will learn a few basic life lessons with friendship in the spotlight. Yes, we will not forget that this month was also important for us because of our Azadi Ka Mahotsav jo hai. It is the 75th anniversary of our independence that we celebrated, and what celebrations all over the country. Ghar ghar tiranga lehraya tha. Well, Wellsprings Counseling Clinic also had a wonderful program called Freedom, Kal, Aaj or Kal. And we tried to look at different aspects of freedom and our life responsibilities that have changed over time. बहुत सारे लोग जुड़ के अपने अपने विचारों को प्रकट किया. There was song, there was patriotism, there were different themes that were brought about the university in diversity that is there. And this is the flavor of our India. We are proud of our India. I was happy to even have my dad, who shares his birthday in this month of August, on 15th of August itself. And he brought about recollections of when he was a child of in the boarding school and saw independence really happen in the year of 1947. Well, it was a wonderful program, and thank you to all those who joined in. And we also had a session for students, specially titled Break Free, क्योंकि हमको अपने नेगेटिव आदतों से, अपने बिहेवियरल प्रॉब्लम से, अपने सोच विचार जो घातक हो सकता है, इन सब से भी तो आज़ादी चाहिए. And that is how we can have a great new you. So we had this 3-day session for students, and it was called Break Free. And we were happy that we could bring about a change in the thought processes and behaviors of school children that participated. And I had the privilege of being a speaker for the recent session done for obstetricians and gynecologists from here all over Maharashtra. And my focus was women's mental health. और ये बहुत ही खास टॉपिक है, and I could throw light on the basic important aspects of women's mental health all through the different phases of life of the woman, right from childhood to teenage and adulthood, and then it was before pregnancy, during pregnancy, after pregnancy, menopause. ये सब पूरा जर्नी जो है उसमें मानसिक स्वास्थ्य औरतों का कितना महत्वपूर्ण है. I could throw light on all these aspects. Well, but now today, this evening, we are celebrating friendship. And therefore, friendship first is our theme for this evening. And let's bring on our wonderful guests of this evening. Let's have AMEER LOTLIKAR, who is there with us. AMEER Hello. LOTLIKAR, welcome. And we are happy to have you with AMEER LOTLIKAR. We have Dr. ANSHUL MAHAJAN, who's joining us from LUDHIANA. Welcome. And sir, with you, we have Juro, the wonder dog, and the family, Hello. family, Rachita, Sid, and IVAAN. So that's our wonderful team today, and we are going to touch upon friendship first. Thank you everyone for joining us. Let's begin our conversation with Mr. AMEER LOTLIKAR. अभी मिस्टर अमीर लोटलीकर मेरा खास दोस्त है, अजीज दोस्त है, and he is with the Central Railways. Well, he's a familiar face on the Tejas train that swings across from Thane to Goa, and always helping people with a smile. I am happy to have his friendship for the many years that have gone by. And
as the head PTE, he has lot of responsibilities upon him also. लेकिन ये सब तो मैं जानता ही नहीं था। अचानक से अपनी दोस्ती शुरू हो गई और ये ही सबसे मजेदार किस्सा है। आमिर, let's listen to how our friendship took a start, how we Of started. course. Fabian, it's been almost 25 years. I met you in Kalyan. Yeah. I was traveling to Kalyan by a rickshaw, auto rickshaw, and it was a Sunday. उन दिनों में वो शेयरिंग रिक्शा ऑटो चलता था, तो दोपहर में कोई रिक्शा फुल अकेला को लेके नहीं चलता था, लेकिन मैंने कैसा कैसा उसको पठाया और लेके गया था। ऑन द वे आई मेट यू, यू जस्ट ऑफर्ड मी 3 रुपीज फॉर द शेयर। अभी भी वो 3 रुपये याद है मुझे। उस हिसाब से हम लोग ने वो दोस्ती हमारी स्टार्ट हो गई। सो उन दिनों में मैं Yes. बैचलर था, अकेला रहता था कल्याण में। वंस आई फेल इल, आई नो, दूध वाला सुबह में 4 बजे आया था, तो उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेरा दोस्त है डॉक्टर फेबियन, उनके घर में जाके उनको थोड़ा बताइए कि मैं बीमार हूँ करके, पूरी रात तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर फेबियन सुबह में 4 बजे मेरे पास आया, मेरे रूम में, मुझे गाड़ी में डाल के उनके घर में लेके गए, उनके पेरेंट्स से मिलाया, मुझे अलग से उनके बंगलों में कमरा दिया और बहुत ख्याल रखा। 4 दिन मेरे को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि मैं गोवा से हूँ, मुंबई में अकेला रहता था, लेकिन ऐसा लगा मेरा बड़ा भाई ने मुझे अपने घर पे लाके इतना फुल ट्रीटमेंट दिया। That's beautiful memories we share, आमिर। ये दोस्ती हमारी जो है, रिक्शा में उनका छुट्टा, उनका पैसा मैंने दे दिया और तब से मुझे जल्दी पहुंचना था बॉम्बे, और टिकट वाले साहब जो है उन्होंने मुझे मदद किया, एंड मेरा सफर भी कटते कटते बातों से दोस्ती के साथ आगे बढ़ गया। एंड दिस इज हाउ वी केप्ट हेल्पिंग ईच अदर। एंड पता नहीं ना, कभी इत्तेफाक से लोग कैसे आपके जिंदगी में आ जाते हैं और फिर एक इतना अहम हिस्सा बन जाता है आपके जिंदगी का। एंड दिस इज हाउ वी बिगैन टू शेयर दैट वंडरफुल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ओवर दीज मेनी पास्ट ईयर्स। देखते देखते आमिर 25 साल हो गए। अब तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार, your family, your wife, your kid, my wife, my kids, your parents, we are all like one big family, and your friends have become my friends and my friends have become your friends. That's the beauty of friendship. और यही नहीं, आमिर तो हर बार हमेशा किसी को खुले दिल से, खुले आम उनको मदद करता है, नो मैटर व्हाट। ही डज नॉट थिंक ट्वाइस, ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, ये हमेशा लोगों को सेवा में लग जाता है। और इसी तरह से मुझे एक कहानी याद है, जब भी हम लोग मिलते थे, खाना खाते थे, उनके साथ एक लड़का संभालने के लिए और साफ सफाई के लिए होता था, भानुदास। वेल आमिर, आप ही के जुबानी सुनेंगे भानुदास की कहानी, बताइए। ये किस्से को भी अभी करीबन 15 साल हो गया। आई वॉज पोस्टेड एज अ जूनियर टीचर एट उल्लासनगर स्टेशन, और उधर एक कैंटीन था, तो कैंटीन में एक लड़का काम करता था और उसका भाई था ये भानुदास। वो मेरा एक दोस्त के होटल में काम करता था, हेल्पर का काम करता था। मेरा दोस्त बबलू करके था, उनके होटल में काम करता था। तो दोस्ती हो गई। मेरा तो ऐसा ही था कि हेलो बाय करना, हंसी मजाक करना। फिर मेरा मैरिज गोवा में था, तो मैंने उनको बुलाया गोवा में, वो गोवा में आए। आके फिर वो मेरे घर में रहे 1 साल 1.5 साल तक, वो घर पे रहे मेरे। फिर मुंबई आए वापस। तो हम लोग दोस्त लोग जब भी, हमेशा जब भी मिलते थे, हमारा पनवेल में एक फार्म हाउस था, तो मेरे 10 15 20 लोग हम लोग हर वीकेंड में उधर मिलते थे। और बहुत हेल्पफुल था, बहुत हेल्प करता था, सब कुछ हमारा काम करता था। चिकन तो मैंने बिरयानी सोचा, में से चिकन के टुकड़े अच्छे अच्छे निकाल के देने का काम वो जरूर करता था, आपके लिए, हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आई फाउंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत सिंसियर था काम में। तो माय ब्रदर हू इज़ वर्किंग इन दुबई, समीर लोटलीकर, आई रिक्वेस्टेड हिम कि समीर भाई अगर होता है तो भानुदास को दुबई में किधर कुछ जॉब ऑफर होता है तो देख लो करके। तो कैसा करके समीर भाई ने बहुत हेल्प किया और उन्होंने भानुदास को 5 स्टार प्रॉपर्टी में हाउसकीपिंग का काम दिया। नाउ इट्स बीन 8 years भानुदास इज़ वर्किंग इन दुबई, एंड वी आर जस्ट फॉर्चुनेट। जस्ट 15 days अर्लियर हम लोग एक फ्रेंड्स दुबई ट्रिप गए थे, हॉलीडे ट्रिप के लिए। तो हम लोग भानुदास जो जो होटल में 5 स्टार में काम करते हैं, उन्हीं के होटल में हम लोग स्टे किया। तो बहुत मजा है उनके साथ उधर दुबई में भी।
And so much satisfaction, so much happiness it must have given you to change the life of this boy completely. आज वो लिखने का कोशिश करता है, मेल्स ईमेल्स फेसबुक पे है, he sends so many messages to the friends group and to Ameer, and he has risen so well in life. दूसरों की खुशी को देख के जो इंसान खुश होता है और उनकी खुशी में शरीक हो जाते हैं, आई थिंक उन्होंने जिंदगी का सही लुत्फ उठाया है. This is a beautiful message for us in this month of friendship, that if there is some way we can help somebody, I think we must go all out to help that person, because life is tough, life is complicated. We land up helping somebody, I'm sure somebody will help us in return. And let's go on to your wife, your life partner, Trupti. And I see here also as a friend, you all both bond with this friendship that is there. और आपने उसके लिए भी कुछ खास किया जो आज उसके लिए एक माइलस्टोन बन चुका है. Let's hear about that as well, Ameer. Of course, my wife, she has just completed her PhD. She's done a doctorate in computer IT. Of course, full credit goes to her only. मेरा तो सिर्फ उसको एक पुश था कि बाबा आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखा जाएगा कैसा क्या होता है. But of course, it was totally her hard work, and she has done it very well. राइट, इतना यश पाने के लिए, इतना सक्सेस पाने के लिए वो सफर आसान नहीं होता है. आफ्टर मैरिज टू स्टडी हार्ड एंड टू एक्सेल इज नो इजी टास्क, एंड फुल क्रेडिट टू Trupti for doing that and getting her PhD. I remember how my mom studied after marriage and got a gold medal in her MA. So, and for a woman who is the most important part of the family, उनके लिए तो मुश्किल होता ही है. But a supportive husband also plays a very beautiful part, and we are happy that you, Aryan के परवरिश में आप लोग दोनों ने, and today Aryan is a young smart boy. It is so nice to see life unfold like this, with all the hard work of the parents, with your hard work involved, and how life partners must also be friends. वेल, ये ग्रुप जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, इनके दोस्त मेरे दोस्त बन गए, मेरे दोस्त उनके दोस्त बन गए, and this is how our world has become sweeter, happier and nicer. And there is a tradition that we follow as friends in our circle. Ameer, आप उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताइए. चलो. यस अगेन, एक ट्रेन जैसा, मैं ट्रेन में ड्यूटी करता हूँ, एक ट्रेन जैसा अपना एक फ्रेंडशिप ट्रेन चालू हो गई. ऑफ कोर्स फेबियन इनिशियल मेंबर्स में आता है, ऐसा करते करते अराउंड 20 मेंबर्स हम लोग बन गए. सो एवरी ईयर वी शुरुआत के पांच प्राइमरी मेंबर्स थे हम लोग. प्राइमरी 5 मेंबर्स थे. तो ऑफ कोर्स अभी वी सेलिब्रेट दिस फ्रेंडशिप डे एवरी ईयर. हर जगह से सब जन मिलते हैं, आते हैं. अभी लास्ट 2 ईयर से वी आर सेलिब्रेटिंग इन गोवा, तो बहुत अच्छा लगता है. 2-3 दिन हम लोग सब साथ में रहते हैं. बट 20 सालों से जितने भी दोस्त जुड़े हैं, सब कुछ छोड़ के हम लोग एक साथ एकजुट ये फ्रेंडशिप डे मनाते हैं. एंड लाइक यू सेड, इट्स बीन अराउंड 25 years. दिस वाज आवर सिल्वर जुबली ईयर that we have been celebrating our friendship together. एंड ये साल में एक बार हम लोग, कोई बहाना नहीं बनता है हमारे लिए. We leave things aside and we spend time with each other, and that friendship bond is what we make reinforced again and again in this way over the past 25 years. Well, we have some beautiful pictures that we can flash here. This is Ameer and his wonderful family, his 2 brothers, his sisters-in-law, mummy and daddy, and the children of the house. How beautiful. His wonderful wife Trupti and son Aryan. We also have the traditional फ्रेंडशिप डे मिलाप जो होता है हम लोग का. ये पूरा ग्रुप 5 से लेके एक पूरा झुंड बन गया हम लोग, एंड वी कीप मीटिंग एवरी ईयर. दिस वाज आवर लेटेस्ट दिस ईयर, इस साल का ताजा ताजा फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन. यू कैन सी ठंडे ठंडे पानी में हम लोग गरम गरम चाय पी रहे एंड एंजॉयिंग द फ्लेवर ऑफ गोवा, and the 25 years cake that we cut, because friendship needs small actions of love and togetherness to keep that bond going. And then this is the beautiful place that we'll ask Ameer about also, Aryan Holiday Home Goa, which is a beautiful place with a swimming pool in North Goa, and villa number 7, which has uska jo
पूल होता है वो आपके लिविंग रूम से ही यू कैन वॉक इनटू द पूल एंड हैव अ ब्यूटीफुल सा नजरिया, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स. बट लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आमिर हिमसेल्फ कि आमिर, देखते देखते आपने आपका हाथ बिजनेस में डाल दिया एंड यू ऑल्सो स्टार्टेड दिस वेंचर. टेल अस हाउ डिड दिस गो अबाउट, हाउ डिड यू मेक योर ड्रीम अ रियलिटी? टेल अस मोर. ऑफ कोर्स अगेन इट्स फ्रेंड्स, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स सपोर्ट. सबसे पहले मैं कभी आई एम वर्किंग फॉर रेलवे सिंस 25 years, बट जस्ट 5 years में ये अपना छोटा सा प्रॉपर्टीज गोवा में बनाया है, आर्यन हॉलिडे होम, और ये विला वी हैव जस्ट बॉट इट. तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया, बहुत सजेशंस दिया, ऐसा करो वैसा करो. ऑटोमेटिकली मैं वो आ गया. आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट सर्विसेज. बहुत अच्छा सर्विस देने के बाद गेस्ट मल्टीप्लाई होता है, और अभी तक 5 सालों में ऐसा हुआ मल्टीप्लाई होके आई हैव नॉट पुट एनीथिंग ऑनलाइन. जस्ट रिसेंटली वी आर ट्राइंग टू डू इट, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बट ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली. Yes, Amir, you are being very humble कि आपका मेहनत इतना रंग लेके आया है. एंड लाइक यू सेड, यस, फ्रेंड्स एंड फैमिली जब आपके सपोर्ट करते हैं तो इट इज ब्यूटीफुल टू सी इवन योर डैड support and come there to supervise, to look at how things are functioning and to help out and to be interested in what's happening at your Aryan holiday home. And mummy of course is there to give us that maternal touch that is there always. हमको कितना अच्छा लगता है जब भी हम लोग गोवा जाते हैं और उनके घर हम लोग सब साथ में हंसी खुशी वक्त मनाते हैं. So Aryan holiday home is a wonderful place that has a swimming pool and lovely rooms available. Go as a group. Wellsprings का नाम ले लो, you definitely always get A1 service, but you'll get even extra special service if you want to say. Definitely. Yes, that's it. Aryan Holiday Home, beautiful sprawling place in North Goa. And of course, Villa number 7, जो बहुत ही बढ़िया property है. You can have, it's not a duplex, I think it's a triplex. You have all 6 bedrooms there and a beautiful swimming pool that is in between all the villas. और आप जैसे हम लोग ने देखा हमारे फोटोग्राफ में, हमारे पैर पानी में रखते हुए शाम का चाय घर का बना हुआ हम लोग वहां पे एंजॉय कर सकते हैं. So Goa is a wonderful place, and to be in these places is even more wonderful. Whenever you feel like you want to make yourself happier and healthier, definitely Aryan Holiday Home and Villa number 7 is there. You can get in touch with Amir and he is there to help you and give you a wonderful stay in Goa. So this is what we have seen. अपना दोस्ती कहां से कहां तक चला गया और इस दोस्ती के रिश्ते के साथ कितने और लोगों से नाता हमारा बढ़ता गया. एंड एज दे से, यारी है ईमान, मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी. और that love, that friendship makes the world go round. So a big toast, a big cheers to friendship and to everyone who are friends. Spread that infection of friendship around. We need that to make this place happier and healthier. Thank you, Amir, for joining us. Stay till the end. But your story has been an inspiration. Misbah, Rebecca, Nitin, Bablu, Praveen from Kerala, Sachin, all of them also, our friendship group gang has also joined in. A lot of people from the Central Railways saying, great, this is a wonderful story we like to hear again and again. You are an inspiration, Amir. Thank you for being our guest Thank you, today. Fabian. We Thank wish you. you all the best for your life ahead and success at your business venture as well. Thank you. Thank you, Thank you for Fabian. joining in. देखा दोस्ती में दम है कि नहीं? Yes, and that is how we can all have smiles on so many more faces. मानसिक तकलीफें अगर बढ़ता भी गया इस दुनिया में, we can still have the stability and steadfast friendship that can bring smiles to our faces and support us in our difficult times. Well, now we move on to our next guest, and our next guest also has wonderful stories to tell us. Let us meet Dr. Anshul Mahajan. Dr. Anshul Mahajan, psychiatrist, Manas Clinic at Tagore Nagar, Ludhiana. It is such a pleasure to have you as our guest. Welcome to the show, Dr. Anshul. I'm happy to have you as my guest. Thank you so much, sir. It's an honor. It's an honor to talk to you.
we have been on shows together before also, और मुझे अभी भी याद है डॉक्टर हरीश शेट्टी के साथ, especially at the pandemic के शुरुआत में, we had worked hard to bring mental health awareness together and in a lot of programs that were there, और उसमें आपका भी contribution बहुत ही बढ़िया था. Keep up that great work. Well, अब कहानी हम लोग देखते हैं डॉक्टर अंशुल के डैडी का, द लेट डॉक्टर राजीव गुप्ता. And he was a psychiatrist par excellence, known far and wide not only in Ludhiana but all across India and abroad. And so Dr. Anshul is the illustrious son of a famous father. And I'd like to know from you, Dr. Anshul, कि ये remarkable friendship जो आपका और आपका डैडी का था, can you share some moments, some thoughts about this remarkable friendship between a father and a son? सर हमारी जो फ्रेंडशिप थी, इट वाज अ वेरी पावरफुल बॉन्ड. तो सर ही वाज माय हीरो. जैसे कि जय वीरू वाज फेमस इन शोले, वैसे वी वर जय वीरू ऑफ लुधियाना और आवर फैमिली. सर उन्होंने मुझे कभी भी आज तक मुझे याद है कभी डांटा नहीं, कभी स्कोल्ड नहीं किया. कोई प्रॉब्लम होती थी, ही यूज्ड टू गिव मी अ मैजिकल सोल्यूशन. इवन जो मेरी प्रेजेंट वाइफ है, टोल्ड हिम दैट आई लाइक हर, तो उन्होंने बहुत तरीके से मम्मी को कन्विंस किया एंड मेरी हेल्प की. एंड नाउ वी आर मैरिड, वी हैव 2 kids. So he gave me the best gift. He said, "Beta, I believe in you. I am there with you." जब जब सर मैं demotivate feel करता हूँ था, तो he was always there for me. He says, "You do it. You do new things. You learn. You earn." Sir, he was my guide. He was my mentor. He was a friend. He was a philosopher. जैसे Krishna and Arjun were there. He was my Lord Krishna, and I was his Lord. I was Arjun. So he motivated me. He took out a talent कि जब मैं public speaking अच्छा है, so he just motivated, and because of him only I am speaking. I am thankful to him कि मैं इस platform पे आया public speaking के लिए. So this was a kind of a friendship. हमारे में बड़ी frank discussion होती थी, open communication था, and each and everything was discussed. From holding his hand to sitting on his chair, I still remember him, and he used to guide me. He never sat अपनी चेयर पे कभी नहीं बैठते थे. कहते थे बेटा आप बैठो, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं नहीं बैठता था. मैंने कहता था कि वो चेयर आपकी है, तो यू हैव टू सिट हियर. आई एम योर जस्ट अ सबऑर्डिनेट. आई एम योर जूनियर. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप. मम्मी से डांट पिटती थी तब भी वो बचाते थे, एंड ही वाज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, एंड आई रियली मिस हिम. So beautifully you have elaborated on this friendship, on this relationship of father and son, Dr. Anshul. ये सच बात है कि इन रिश्तों में ताकत तभी बनता है जब दोनों तरफ से एक समझदारी हो, एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो. We saw beautiful qualities that you've brought out of trust, support, maybe sometimes silent and sometimes being vocal and appreciative, being encouraging, motivating, mentoring the child. पेरेंट्स और बच्चे का नाता इतना गहरा होता है कि इसके ऊपर आगे का जिंदगी का बहुत सारा आगे का हिस्सा निर्भर होता है. सो व्हेन द बॉन्ड बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट, एंड इन योर केस फादर एंड सन, इतना मजबूत होता है, तो फिर आगे जब परेशानी हो, जब तकलीफें हो, तब भी हम उनका सामना हिम्मत और हौसला के साथ कर सकते हैं. So parents, if you all are watching this, remember that giving the child a sound childhood and psychological stability comes from nurturing the bonds of relationship that is there. वो bonding जो होता है वो बहुत ही बढ़िया है. And somehow I'm also I to my mind comes that beautiful movie Lion King, जहाँ पे पिताजी का और बेटे का जो रिश्ता है कितना बढ़िया तरह से समझाया है और बताया है. And thanks to you, you have given us this story and you have told us the relationship that you all share. Well, we all know then later that Dr. Rajiv Gupta courageously battled cancer and finally breathed his last with a smile. But he taught us a wonderful lesson of courage in all of this journey. Can you tell us something more about this journey and his battle with cancer? Sir, it was in September 2019 when he was diagnosed. So it was a localized tumor, and sir, it was operated. The third day of operation, he came back. उसका जैसा my father had a favorite food Chinese. So हम
हमने प्लान किया, मैं कहा पापा चलो चाइनीज खाने चलते हैं, कहते बेटा चलो चलते हैं। ही वॉज अ पावरफुल मोटिवेटर। सब पेन होती थी पर पेन कभी चेहरे पे नहीं आती थी। ही यूज्ड टू सी हिज पेशेंट्स, he used to tolerate chemotherapy side effects, he used to take medicines on time, he was very disciplined about his treatment plan. कभी भी चेहरे पे पेन झलकने नहीं दी सर उन्होंने 2.5 years unless the cancer spread. Regular OPD, regular follow up. Though he was admitted in the hospital, I remember उन्होंने आपका एक सेमिनार भी अटेंड किया था and we had a video talk at that time also. He was yes, and at that time many patients used to visit him, used to get consultation, many staff used to get consultation. He used to get consultation on phone to us, to all the patients who wanted to talk to him. He was very courageous. Last when in last 40 days when the जब बीमारी फैल गई थी तो he had lost energy, he had lost हिम्मत, but तब before that he was facing it with a very brave heart, courageous, and he was a very brave person and a strong person I ever met, and I don't think I'll be meeting another person like him. Only request as per spirituality, if कहते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े को डिस्कार्ड करते हैं, I want him as my father in every janam we meet, and I really miss him. He had a courage to fight the illness, and सर बहुत सी बार हमारे पेशेंट्स भी जो आते हैं डिप्रेशन के एंजाइटी, इफ आई टेक अ लॉन्ग हिस्ट्री, दे आर हैविंग कैंसर, सो वो हम बैठ जाते हैं, वी फील इरिटेबल. कभी इरिटेबिलिटी का निशान तक नहीं आने दिया, कभी गुस्सा नहीं होने दिया. दो ही वॉज ऑन कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, ही नेवर शाउटेड एट मी, ही नेवर शाउटेड एट एनीवन इन द फैमिली, एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी करेजियस पर्सन. And always had a smile on the face. In fact, आपने हमारे साथ शेयर भी किया था कि लास्ट मौके पे जब उनको during his last rites also, the smile was still on his face during that last journey, isn't it? Yes, yes, sir. That is how strong his positivity and his courage is, and I think it's shown all through. Dr. Rajiv Gupta, हमारा एक जो ग्रुप कुछ साइकाइट्रिस्ट का 13 साइकाइट्रिस्ट का ग्रुप था, एंड इट्स कॉल्ड साइकाइट्रिस्ट यूनाइट. हम लोग मिलके बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस और फिल्म्स भी बनाए हैं, और हमारे पूरे ग्रुप में, in spite of being such a senior member, he was the youngest at heart, always cheerful, always giving us ideas, and always willing to shoot जो भी है जैसा है, ever ready to work. And उसका ये तकलीफ जो था, he never let his cancer come in the way of anything or take any special privileges or concessions because of his health. This story of his, and it definitely gives us lessons of courage, and the fact that we have to accept what is in our health, what is our problems. Acceptance के साथ with strength and support फैमिली का और फ्रेंड्स का अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जर्नी जो है, ये सफ़र जो है और आसान होता है. सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, all of this is replete in his story, and I think we learn so much from your dad as a role model for all of us. May his soul rest in peace. And then I think we must also realize that as a psychiatrist, you have seen these wonderful relationships and friendships that blossom. आपको क्या लगता है, what is the power of positive relationships? As a psychiatrist, what would you emphasize about this? Sir, I would like to emphasize कि power of positive friendship में एक तो loneliness नहीं होती है, केयर होता है, अफेक्शन होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो मूड अच्छा होता है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन, चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एंजाइटी आर वेरी लेस. तो फ्रेंडशिप होती है जहाँ केयर अफेक्शन होता है, वहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, जहाँ दिल मिलते हैं वहीं दोस्ती पक्की होती है. इसके अलावा जहाँ ओपन कम्युनिकेशन होता है वहीं पे मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होता है. सर, वी टेंड टू लर्न न्यू स्किल्स एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अब इस दौरान जैसे कि इसमें फादर्स डेथ के बाद वी आर फेसिंग ग्रीफ ऑल्सो. सो फ्रेंड्स हमें आते हैं, दे कंसोल अस. सो वो ग्रीफ को ओवरकम करने के लिए
ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए फ्रेंडशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली the risk of any medical problem like high blood pressure and any psychiatric disorders reduces with a positive friendship. डेफिनेटली. तो एक साथ में अगर बोला जाए, यू हैव सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड कि द पावर ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इज टू एनहांस योर साइको इम्यूनोलॉजी. ये दिमाग और शरीर दोनों इतना तगड़ा होता है कि चाहे वो बीमारी मन का हो या तन का हो, उसे फेस करने की हिम्मत और शक्ति हमको मिल जाता है. So definitely let us realize that we must foster powerful positive relationships. These are beautiful photos, beautiful pictures of Anshul with his dad, the late Dr. Rajiv Gupta, also with Anshul and his brother. And as this beautiful photograph says, happy Teachers Day to the best teacher in the world, because you've learned from the best and you have valued the best. Beautiful memories that are there. We also have another slide. और देखिए परिवार में कितना खुशी है, कितना मेल मिलाप है, और ये बंधन बहुत जरूरी है. ये बॉन्डिंग जो होता है हमारे फैमिलीज में, जो ओकेजन चाहे हमको मिल जाए, चाहे वो शादी हो, बर्थडे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, क्रिसमस हो, जो भी हो, let's have excuses to just feel the power of our relationships and bond stronger and better as a family, as those relationships that matter. कितना खुशी दिखाई देता है इन तस्वीरों में, but I feel it definitely cannot do justice to the amount of strength, satisfaction and happiness that you have experienced, Dr. Anshul, as his son. Beautiful photographs, and thank you for sharing these wonderful memories with us, because it tells us that you've helped yourself through that grief, through that moment, with these powerful relationships and their memories. क्या stress जब आता है आपकी गली, is there anything else you do to bust your stress and to help yourself feel better, Dr. Anshul? देखिए सर, ये टाइम स्ट्रेसफुल तो है फॉर माय मदर, फॉर मी, फॉर माय ब्रदर एंड फॉर माय फैमिली, पर सब कहते हैं ना, एकजुट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो स्ट्रेस डिवाइड हो जाता है. तो आई थिंक हमें वो कैपेसिटी पावर है. आई थिंक सर ये टाइम थोड़ा बुरा है, वक्त वक्त का खेल है. टाइम बुरा है, अच्छा आ जाएगा, साथ साथ मिलके सहेंगे तो स्ट्रेस भी भाग जाएगा. बिल्कुल दमदार. Any particular message that you want to give to our audience that's listening in for the show? सर पर्टिकुलर सी फ्रेंडशिप, पॉजिटिव फ्रेंडशिप रखिएगा, उससे आपको काफ़ी हद तक आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ सही रहेगा. एंड थैंक यू डॉक्टर फैबियन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय बॉन्ड विद माय फादर. I loved him so much, but the only thing left, I did not express him because we were so busy in our work. So hopefully this video goes through him in some of the other form and he may feel happy. Thank you so much. I'm sure, Dr. Anshul, your father is a proud man and he's beaming there with a smile on his face, with all the love and the appreciation that you've shared about your relationship with your dad. We are thankful that you've shared this with all of us. And like they say, people who we love never really die. वो हमारे दिलों में, हमारे यादों में हमेशा अमर रहते हैं. They live in our hearts and in our minds, and with those powerful memories that we have, they will always be alive. We wish you all good luck, Dr. Anshul, in your journey ahead with your practice, with your family, with your personal and professional life. And इसी तरह से लोगों को बढ़ावा देते हुए do spread the message of positive mental health. Thank you for being a guest on our show. Thank you so very much. Thank Yes, you so much. and that is why we have so much of appreciation flowing in. Thank you, Dr. Varsha, Rense, Annie teacher, Sylvia, all of them appreciating what they've just heard from Dr. Anshul. And yes, bonding के लिए हमको सब मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो रिश्ता जो कुछ भी हो, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हो. Well, let's get into the third part of our show today, and we have a very interesting guest with us. As you will know and see, we have Juro. Juro is the hero of this segment, and that is a wonderful wonder dog that we have. Juro, along with the family that he has, that's Rachita, that's Siddharth, and that's little IVAAN. So thank you all of you for joining in, and wow, someone's feeling really happy. Don't miss that bow and all dressed up
for today. Thank you, Juro, for being a very important part of our show today. Well, let us see and know more about Juro's journey into your life. इनका जर्नी आपके जिंदगी में कैसा और कहाँ शुरू हो गया, बताइए। जूरो का जर्नी बहुत ड्रामेटिक स्टार्ट हुआ। जूरो का हमने 1 जून 2019 को घर पे लाया। तो ही इज बॉर्न ऑन अप्रैल 25, 2019। तो वो उसको हमारे लाइफ में लाना बहुत रिबेलियस डिसीजन था। घर में किसी को डॉग पसंद नहीं था, बहुत सारा सुपरस्टिशन रिलेटेड थे कि नहीं लाना है। तो बहुत ऐसा झगड़ा करके रिबेलियस होके मैंने जिद किया कि मुझे डॉग चाहिए। तो जूरो आया 1 जून को घर पे। जूरो आया तभी ही वाज ओनली 36 डेज ओल्ड, इतना सा छोटा सा था। और उसके बाद में उसको लाने के बाद में बहुत जैसा न्यूबॉर्न बेबी का केयर करते हैं वैसा उसका केयर किया हमने। फिर वो बीच में बीमार पड़ गया तो हम लोग सब लोग बहुत डर गए। एकदम वापस एक कोई घर में नया बच्चा बॉर्न हुआ है वैसा फीलिंग आया। वो आने के बाद में रात को 3-3 बजे उठता था, उसको भूख लगता था तो बाल खींचता था, हम लोग सोते थे तो सिद्धार्थ के गद्दे में जाके घुस जाता था, छोटा सा चूहा जैसा। इधर घुस, उधर जा, इधर जा, उधर जा, छोटी छोटी जगह वो ढूंढता था जाने के लिए। बहुत नॉटी था, बहुत मस्ती करता था। हमारे पूरे फुल बिल्डिंग उसको मिलने आते थे लॉकडाउन के टाइम पे। सबका एंटरटेनमेंट बन गया था वो लॉकडाउन में। क्या बात है, क्या बहुत बात है। मजा आया जब वो छूटा उसका। शुरुआत तो सिद्ध के साथ जिद हो गया इनको लाने के लिए। एंड कहानी में शुरुआत में इनकार था लेकिन अब सबको प्यार ही प्यार है, राइट? सिद्धार्थ जो अगेंस्ट थे वो ज्यादा अटैच हो गए। मैं भी अगेंस्ट था, फिर भी मैं उससे ज्यादा अटैच हो गया। अभी वही तो सुनना चाहते हैं हम लोग। आपने तो पहला शुरुआत में मना तो किया था लेकिन अब आपका लगाव सबसे ज्यादा हो गया, ये हुआ कैसे, कुछ बताइए। तो एन नंबर ऑफ स्टोरीज है, ऑफ देम मैं कुछ आपको सुनाता हूँ। जैसे डेली बेसिस कभी इसे मैं डांटता हूँ या रचिता के साथ कभी अनबन हो जाती है तो वो घुस जाता है मेरे ऊपर, अटैक करते हैं। इतना लॉयल है कि नहीं नहीं फाइट नहीं होना चाहिए। मतलब उसे भी समझता है कि नहीं फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, इसे भी स्कोल्ड मत करो, इसे मत मारो। हम हमेशा मतलब पॉजिटिव हमें वाइब्स दे रहा है। सर हम लोग इवान को डांटते हैं या उसको चिल्लाते हैं तो वो अपना टॉय लेके आ जाता है कि उसको मत डांटो, टॉय से खेलो, उसको नहीं डांटो। कभी हम लोग उसको बहुत समझदार है। कभी इवान की तबीयत खराब हो जाती है या हम में से किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है या हम अभी बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मेरे पास आके मेरे हाथ पे ऐसा सर रख के बैठ जाता था, मुझे देखता था कंटिन्यू कि क्या हो गया है। इवन एट द टाइम ऑफ कोरोना, इसे कोरोना हुआ था, अभी होम क्वारंटाइन थी ये। उसने ऑलमोस्ट 2.5 डेज कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया, मतलब पानी पी रहा था, खा ही नहीं रहा था, पूरा खाना छोड़ दिया था। क्योंकि मैं घर में नहीं थी, मैं बाजू वाले फ्लैट में क्वारंटाइन थी। मतलब इतना सैड हो जाता है वो कभी कभी। मतलब उसे तो वाइब समझ में आते हैं कि हमारा कोई ये है, और इसी तरह से हम लोग का अटैचमेंट उसकी तरफ और बढ़ने लगा। हम लोग घर पे अगर नहीं रहते हैं या कभी बाहर जाते हैं 12-12 घंटा वो कुछ नहीं खाता है, कुछ भी नहीं पीता है जब तक हम घर पे नहीं आते। हाँ, हम लोग जब तक घर पे वापस नहीं आते। ऐसा एक टाइम था कि हम लोगों को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, पूरा दिन उसने खाना नहीं खाया। हम आने के बाद उसने पानी पिया और खाना खाया। वो सैड होके हम वेबकैम लगा के चले जाते हैं तो वो हम वेबकैम में उसको देखते हैं कि क्या कर रहा है, वो ठीक है कि नहीं। सैड होके एक जगह पे सोता है, फिर उठता है, दूसरी जगह पे सो जाता है, डोर के पास में देखता है। सर आपको आश्चर्य लगेगा कि हम नीचे कार पार्क होते ही या हमारा गेट बिल्डिंग से थोड़ा सा 500 मीटर्स पे है, हम वहां पे आ जाते हैं कार लेके। उसको समझ में आ जाता है, हम वेबकैम में देखते हैं तो वो भौंकना स्टार्ट हो जाता है कि उसको समझ में वाइब्स पता नहीं अभी वो क्या है। हाँ, उसको समझ में आ कि वो आ रहे हैं।
डेफिनेटली। सो ये आपका फैमिली का तो हिस्सा ही बन गया है, एंड ही इज बोथ सेंसिबल एंड सेंसिटिव आप लोग के यस लिए, यस, इतना वेरी मच, प्यार देता वेरी भी है और हक से इतना प्यार लेता भी है। तो देता भी है। सिद्धार्थ का भी दिल जीत लिया। और छोटा इवान का, इवान आप बोलो कुछ, आपको आपका जुरो कैसा कितना पसंद है बताओ। हाँ, ये तो उससे बैठता है बाइक के जैसा, उसका कान ये करता है, फिर भी बेचारा कुछ नहीं करता। आपके लिए इवान टॉय भी बहुत लेके आता है प्रोटेक्टिव है। जब आप परेशान होते हैं या मम्मी डैडी डांटते हैं? अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड है? Is that so? How has the bond been between both of them? He has कभी इवान डरा नहीं उससे वगैरह जब ऐसा? बिल्कुल नहीं सर, डे वन से इवान उसको उठाता है, उसको हाथ लगाता है। वो जब छोटा था, हम लोग जब उसको नया नया लेके आए थे जूरो को, तो इवान उसके साथ में ही दिन भर बैठा रहता था। वो कैसा सो रहा है, क्या कर रहा है, बॉल से खेलता था। बिल्कुल हमको ऐसे पहले लगा कि जूरो छोटा है तो जूरो का दांत लग जाएगा इवान को, या जूरो के नाखून लग जाएंगे, बट इतना जूरो इतना समझदार है सर। इवान उसके साथ में इतना वाइल्ड खेलता है। कभी दोनों गर्ल बेड के नीचे जाके बैठते हैं, यूरो और ये अंदर बेड के नीचे, फिर भी कुछ नहीं। फिर मुझे भी इतना डर लगता है। Partners in crime. पार्टनर हाँ, इन क्राइम। Very nice. And what do you all do to give special care, special love and affection for Juro, or what activities do you all involve in? सर हम लोग जैसा मैं और सिद्धांत जैसा इवान का केयर करते हैं, टाइम टू टाइम डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो या उसका मेडिकल चेकअप हो, वैक्सीनेशन हो, वो सब जूरो का ईयरली टाइम टू टाइम 6 मंथली वो सब उसका केयरिंग चलता है। फिर उसको 6 महीने में एक बार ग्रूमिंग के लिए, हफ्ते में एक बार उसको नहलाना, उसको कोम करना, सुखाना, ब्रश करना, उसके लिए जो भी यूजफुल शैम्पू है, उसका डॉग फूड है, प्रॉपर डॉक्टर के एडवाइस के साथ में उसका। एक और बच्चा घर में है, एक और एक और बच्चा फैमिली घर में आ मेंबर गया ही है। है। उसी यस तरह से let's यस have a look at some beautiful photographs that we put together in a slide of this wonderful family of Juro with Rachita, Sid and Ivan. Look at him enjoying the laptop, and then down in his top knot with the towel and with little Ivan, very photogenic I must say, and with family and friends. कितना बढ़िया सा दिखता है कि ये बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है। वेरी ब्यूटीफुल। वी ऑल्सो हैव अनदर स्लाइड, and that's him, I think, in a contest and part of a parade, and also at a beautiful birthday party, stealing the show, enjoying all the attention and getting the right attention for all the good things about him and the way he holds this family together with love and affection. Yes, Juro is definitely a member of the family. वो कोई कंपटीशन या परेड था जिसमें आप लोग पेट शामिल परेड हुए? था, 15 अगस्त का पेट परेड था यहाँ पे। तो हम उसको 75 डॉग्स थे वहां पे, तो जूरो का हम लेके गए थे। एक मैराथन जैसा था डॉग्स का, नॉर्मल वॉकिंग कराना। उसको हम वेरी, हर इवेंट में लेके जाते हैं सर, डॉग बहुत बढ़िया, फ्रेंडली बहुत रेस्टोरेंट। खुश नसीब है जूरो कि आप लोग इतना बहुत उसके तरफ ध्यान देते हैं और वो भी आपके तरफ ध्यान वो भी देता है। देता है। वो भी देता। बिल्कुल बिल्कुल। And in fact, incidentally, yesterday 26th August was International Day of the Dog, और Yes. ये खास हम लोग को याद दिलाने के लिए है कि डॉग इज स्टिल द मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और ये नाता इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना उन लोग सेवा के साथ ये रिश्ता को आगे बढ़ाते हैं। And definitely we can take care of a pet if we have in our house. But I will leave the last words to you all कि आपको क्या मैसेज देना है हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं इस वक्त, बताइए। तो मेरा एक फेवरेट कोट है, इफ आई कैन बी हाफ ऑफ द पर्सन ऑफ माई डॉग, आई विल बी ट्वाइस द ह्यूमन आई एम करके। क्या बात है, मेरा इतना बहुत बढ़िया सा फेवरेट कोट कोट है है। सर। डेफिनेट वो इतने डॉग या कोई भी एनिमल इतने, अभी मेरा जूरो के साथ में जो रिलेशन बना है, जूरो इतना मासूम है सर।
उसको हम लोगों के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ अटेंशन और प्यार चाहिए। आप खाना दो नहीं दो, आप मुझे डांटो, आप हम लोग उससे कैसे भी बिहेव करे सर, वो हमसे डे 1 पे जैसा बिहेव करता था वो Unconditional टिल love. डे वैसा ही बिहेव करेगा। ये Unconditional love. And बहुत that is a beautiful message. I'm sure, yes, through all our three guests, the message that we have got today in our show is that friendship is first. And if we have the next slide flashed, I think our take home message is very clear. Let's have the next slide flashed. The best relationships start off as a friendship first. चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसका बुनियाद एक अच्छा खासा दोस्ती होता है. The strongest relationship is the one that started as friendship first. So this message, we ask you to definitely spread it around you and make the best that you can of friends with the world around you. And this message will help us to stabilize our minds in this world of surprises, difficulties, twists, and turns. Well, we also bring to light our other programs that we have to keep it going. Just to give you a reminder, yes, we need to have Juro in the picture. Yes, Juro, thank you for being our guest. And when we do the honors at the end, we will make sure we have a big thank you for all our guests who are here. AMEER, Dr. Anshul, Juro, and the family with Rachita, Sid, and IVAAN. But we'll just take a minute to focus on our programs that we have to remind our audience about. We have a Mentastic that is specifically for children of the school, and you can definitely take part in these various programs once every month that we have. We have on this Sunday, that is tomorrow, the Vision Board Dynamics on 28th at 6 p.m., especially for children of the school. Do take part in this. It's a wonderful program of how you can make your dreams a reality. We have our online daycare counseling that goes on every week, 5 to 6 p.m. in the evening, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 4 sessions to help people to get better with their problems through simple basic counseling. We have Ouch on every second Sunday of the month, and that is our Overthinkers Unlimited Chill Out Help Zone. 11th of September, 22nd, 12 noon is when we'll have our next session. We also tell you about our forthcoming program, and that is September 10th is World Suicide Prevention Day, and September 21st is World Alzheimer's Day. We have two beautiful Power Pack programs on Saturday, 10th of September at 10 o'clock at Fortis Hospital, Kalyan, for school heads. Please spread the message to your school heads. We will invite them to participate, to celebrate life. And on Sunday, 11th at Shri Hospital, we have it at evening 7 o'clock. Yes, so don't forget to tune into these programs and be there. These are physically participative programs, so please come to the venue and be part of it. And tonight, don't forget to tune in to our Insta Live and Bato Bato Mein Season 2, Episode 16. Today, our guest is Rebecca. Responsibly, Rebecca, we talk about her teaching abilities and the stress during COVID, and as a singer, animal lover, and mental health activist, the responsibilities that she shares. Wellsprings Counseling is our Insta handle. Join in tonight at 8 o'clock. And finally, MANN DARPAN for all the right vibes that you want, positivity, power, and much more. These good vibes come to you every fourth Saturday of the month, 6 o'clock. Tune in on YouTube or Facebook. The platform is 1MD. We thank our behind the scenes star, Anirudh Sapadnekar, for putting us all together. And here we are once again all together. Thank you, Anirudh, for technically getting us in the perfect zone. Here we are all together, and I hope we have a good photograph, a nice screenshot of all of us smiling. Yes, and with Juro coming up a little. Yes, Juro. Now that's picture perfect. So Anirudh, please do the honors. Get us all in. Yes, smiling best. That's AMEER, Dr. Anshul, Juro and family, Anirudh, and myself. Yours truly, Dr. Fabian Almeida, asking you to spread the message of positive mental health all around. Thank you, everybody, for joining us. All the best, all the time. Take care. Thank you. Thanks, everyone.